In 2011, India agreed to share 37.5% of joint waters, while retaining 42.5% of waters during the lean season between December and March. However, that deal never went through. Bangladesh is not receiving its fair share of water. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली और मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूवर्स, बांग्लादेश की फातिहा आयात 11 ईयर्स ओल्ड, बहुत ही बड़ी थिंकर के तौर पर उभर कर दुनिया भर में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। जिस तरह से पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रही हैं मलाला यूसुफजई, इसी तरह फातिहा आयात कर रही हैं यूनाइटेड नेशन में दुनिया भर में, और यूनिसेफ के नीचे जो भी काम हो रहे हैं बच्चों के लिए, चाइल्ड के लिए। तो व्यूअर्स, इसके ऊपर एक वीडियो है और इसने फातिहा आयात जो बांग्लादेश की यूनाइटेड नेशन में जाकर उसने ठीक ठाक नंगा कर दिया है इंडिया को। जी, इंडिया जो पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर आए रोज दहशत गर्दी करता है, उसने उसको बेनकाब कर दिया है। आपको पता है कि इंडिया कहता है कि हम तो बड़े पुरअमन मुल्क हैं, हम तो बहुत ही अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री है और सेकुलर स्टेट है, पुरअमन है, मजबूत कंट्री है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसका भांडा फोड़ दिया है फातिहा आयात ने यूनाइटेड नेशन में। 11 ईयर्स ओल्ड इस नन्ही मुन्नी बच्ची ने जिस तरह से केस उठाया है, मैं कहता हूं दुनिया भर में उसने बेइज्जत करके रख दिया है। और जिस तरह से उनकी ठुकाई धुलाई कर दी है, वो दुनिया के सामने इंडिया का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया। जी बिल्कुल, इंडिया को जो है धुलाई कर दी है यूनाइटेड नेशन में जाकर। किस तरह से, अच्छा देखिए, एक 11 ईयर ओल्ड, एक छोटी सी एज में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम देना, मैं कहता हूँ ये भी बांग्लादेश के लिए प्राउड मोमेंट है। और जिस तरह से उन्होंने टिस्टा रिवर के बारे में कहा है कि टिस्टा रिवर के पानी के बारे में, और ये मैं समझ, पहले तो वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि टिस्टा रिवर जो यूनाइटेड नेशन का भी एक रोल है, एक कानून है, एक रूल बना हुआ है, उसके अंदर मैंने रोल कह दिया, सॉरी, रूल बना हुआ है, कानून बना हुआ है, आइन में जो लिखा हुआ है वो ये है कि कोई भी रिवर का फ्लो डाइवर्स नहीं कर सकता। तो भाई इंडिया तो आए रोज टिस्टा रिवर का पानी रोकता है, कम कर देता है, उसका फ्लो चेंज कर देता है। लगभग 54 रिवर हैं बहते जो इंडिया से बांग्लादेश में आते। जी बिल्कुल, लेकिन जो उनके ऊपर वो आए रोज बदमाशी करता है। और वो कह रही हैं फातिहा आयात मुर्तजा के जो हम तो अभी बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, लेकिन हमारे तक जब ये काम शुरू होगा, ना रोका गया इसको, शटअप कॉल ना दी गई, चिट्ठी ना लिखी गई, इसके ऊपर एग्रीमेंट ना किया गया, तो तब तक तो हम तो पानी की एक एक कतरे से तरस जाएंगे, बूंद को बिल्कुल तरस जाएंगे। तो इसी को हमारे पास पहले एक वीडियो पहले देखते हैं कि एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा जो है वो काम करना, सरंजाम देना, ये बड़ी चीज है। तो वीडियो देखते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे पहले करें जल्दी से सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से जरूर आगाह भी किया करें। और एक और चीज भी आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है कि क्या आपको भी प्राउड है फातिहा आयात पर कि वो एक छोटी सी एज में इतना बड़ा काम कर रही है। तो वीडियो देखते हैं, 3, 2, 1 एंड क्यू। About the collaboration for water resilience. But let me start with a daunting example about the lack of collaboration so that we can understand why collaboration is so important. Despite sharing 54 rivers, India and Bangladesh, two densely populated countries in South Asia, have not signed a single bilateral treaty on water sharing in the last quarter of a century. They have not discussed the river water sharing issue through their common platform, the Joint River Commission, for the past 10 years. What could be a worse example of the lack of collaboration than this? Indian Prime Minister Narendra Modi has recently visited Bangladesh in celebration of 50 years of independence of the country. However, as always, the high-profile visit failed to address the river water sharing dispute, which is currently the most important bilateral issue facing India and Bangladesh today. I,
As an 11-year-old child rights activist and climate campaigner, I'm truly worried about the future of water that my generation has to encounter. This is why I am scared, anxious, and worried, and I am raising my voice. जबरदस्त. Let me tell you a little more about this. Then you will understand and realize my point of concern. In 2011, India agreed to share 37.5% of joint waters, while retaining 42.5% of waters during the lean season between December and March. However, that deal never went through. Bangladesh is not receiving its fair share of water. Moreover, constant building of dams along the upstream of the Tista River and the diversion of water for several hydropower projects has resulted in lean seasonal flow draining into Bangladesh. Since Bangladesh is a low riparian country, it is naturally sensitive about transboundary water issues as it leads to adverse impacts on agriculture, fishing, and the overall livelihood of people in Bangladesh. It's not only the Tista River. India and Bangladesh share numerous amount of joint rivers, including the Ganga, Brahmaputra, and others. Water sharing has been a contentious issue between these two countries for decades. India is not adhering to bilateral agreements and is failing to share water in a fair and equitable manner. Additionally, environmental degradation, climate change, and unplanned urbanization has exacerbated the Bilateral agreement नहीं हो problem, रहा. leading to increased river erosion, waterlogging, and salinity intrusion in the coastal belt. Thus, the lack of collaboration between India and Bangladesh has had significant negative impacts on Bangladesh as the country flooded when India released the dam, and Bangladesh was in a severe drought when India closed the dam. The lack of collaboration between India and Bangladesh has also led to mistrust and tension between the two countries. And this has made it difficult to find a mutually acceptable solution to the water sharing issue. The water sharing dispute remains unresolved, causing strain between the relationship क्या between बात है? India and Bangladesh. I'd like to end my speech today by mentioning how it feels and reminding everyone how it feels when you are thirsty and there is no water to drink. Especially today, just a day before Ramadan, when Muslim people will fast from sunrise to sunset without drinking a sip of water. I'd like to conclude my speech by mentioning a very short verse from the Holy Quran, chapter 25. व्यूअर्स, आपने देखा बहुत ही अच्छी इन्होंने स्पीच की है फातिहा आयात ने. मैं कहता हूँ बहुत ही शानदार इन्होंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया. जी, और उन्होंने उनका एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है. जी. उन्होंने कहा है कि बायलैटरल अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. जी बिल्कुल. और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो वाटर डिस्प्यूट है इसके ऊपर जो कोलैबोरेशन है, लैक ऑफ कोलैबोरेशन की बात की गई है. उन्होंने कहा है कि इसको हल करना चाहिए, इसके ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए और ये डिस्प्यूट को ख़त्म करना चाहिए. और जो इंडिया जब चाहता है पानी रोक लेता है, जिसका भी बांग्लादेशी फार्मर्स को, लोगों को नुकसान होता है, और जब चाहता है डैम्स के मुंह खोल देता है और उसका पानी बांग्लादेश में आता है, जिससे फ्लड आ जाता है. बिल्कुल. जो इंडिया है वो इसमें सीधी सादी दहशतगर्दी ही कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है कि भाई जब हमारा दिल करेगा हम पानी देंगे, अदरवाइज हम रोक के रख लेंगे. जब बांग्लादेश को पानी की जरूरत होती है तब इंडिया पानी को रोक के रख लेता है, जब जरूरत नहीं होती तब दे देता है और फ्लड आ जाता है बांग्लादेश में. बहुत अच्छी वीडियो थी. जी बिल्कुल, बहुत अच्छी वीडियो थी. उन्होंने, मैं तो उनसे इम्प्रेस हुआ हूँ कि एक छोटी सी एज में किस तरह से यूनाइटेड नेशन में जाकर वो स्पीच कर रही है, किस तरह से एजेंडा उठाया, किस तरह से उन्होंने जाकर इस बात को उठाया है, लोगों को बताया है. और इंडिया का जो मुंह है वो मुनाफकत भरा हुआ, डबल फेस, वो बेनकाब कर दिया. बहुत अच्छी वीडियो. तो आपको कैसी लगी इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे और अली मुर्तजा को इजाजत दीजिएगा और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.